Let us start rolling motion of body. Rolling motion is different from the rotational motion. Rolling motion of body is a combination of rotational motion and the translational motion. For example, disc, cylinder, sphere, or we can say ring. These are the examples in which we can observe the rolling motion of the body. सिलेंडर में, रिंग में, डिस्क में और स्फीयर में हम लोग रोलिंग मोशन ऑब्जर्व कर सकते हैं. बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. The motion of a single particle is difficult to explain. For that, we have to consider two types of motion of a rolling body. These two types, first one is rotational motion of a body and second is translational motion of a body. Translational motion of a body. How it is? Rotational motion means what is that? When the body starts its rotational motion, then each and every particle of the rotating body possesses the circular motion. The combination of motion of all the particles of a body is the rotational motion of a body. हर एक पार्टिकल जो होता है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और उसके बाद में फिर कंप्लीट बॉडी का जो मोशन है उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं. That means we can say that this is the circular motion about an axis passing through the center. इसका मतलब वो एक प्रकार का सर्कुलर मोशन होगा जो एक्सिस के अबाउट हो रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं रोटेशनल मोशन. Motion of body about its own axis called as the rotational motion. But in the rotational motion, all the particles performing the circular motion. तो जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो किसी सेंटर पॉइंट जो होगा उसके अबाउट तो करेंगे. दे आर possessing circular motion about an axis passing through the center of body. That means nothing but the rotational motion. What is about the translational motion? सेंटर ऑफ मास अपनी जगह नहीं छोड़ता. बॉडी अगर रोटेट भी हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास उसी जगह पर होता है. एंड दिस सेंटर ऑफ मास व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, rotating body moves from one place to another place, that time the center of mass possesses the linear motion, possesses the translational motion. Let us consider this is the surface. This is the sphere, consists of large number of particles. This is the center of the sphere. When this sphere moves from point A to point B, this center of mass moves from A to B without changing its position. Without changing its position. Position means बॉडी के अंदर इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है. यहीं पर है, बॉडी रोटेट हो रहा है, बॉडी रोटेट हो रहा है, फिर भी ये इसी पोजीशन पर आगे बढ़ते जा रहा है, इसी पोजीशन पर आगे बढ़ते जा रहा है.
moving along a straight line, moving along a straight line. That means we can say that is center performing translational motion, center performing linear motion. But all the particles, remaining particles, सेंटर को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं। ये जैसे जैसे घूमता जाएगा आगे, रोटेट होते हुए आगे बढ़ेगा, तो इन पोजीशन ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होगा। So the motion of a body is a rolling motion which consists of rotational motion as well as the translational motion. That means we can say that this rotating body possesses two types of kinetic energy: rotational kinetic energy and translational kinetic energy. In the rolling motion of a body, we are going to find out kinetic energy of a rolling body denoted by kinetic energy rho. Rho means a rolling body. Then here kinetic energy of rotating body and kinetic energy of translational body. Let us consider V is the linear velocity of center of mass. Omega is angular velocity of a body. I is moment of inertia, mi of a body, and capital R is the radius of a body, and capital M is mass of a body. So according to given data, kinetic energy of rotational is half I omega square. Kinetic energy, rotational kinetic energy, half I omega square. Translational kinetic energy is half m v square. Let us say that this kinetic energy is denoted by E. So E is equal to half I omega square plus half m v square. In this case, we have the formula for moment of inertia in terms of radius of gyration. K is the radius of gyration, and hence this formula becomes E is equal to half. In place of I, substitute mk square omega square plus half mv square. Now there is relation between linear velocity and angular velocity. V is equal to r omega. So this formula becomes E is equal to half m k square. In place of omega we can write V upon R. यहाँ पर कैपिटल R लेना है हमें, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस हाफ m V स्क्वायर. हाफ m V स्क्वायर we can take common, half m V स्क्वायर, हाफ m भी निकल गया, V स्क्वायर निकल गया, इन ब्रैकेट k स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर plus 1 is the formula for kinetic energy of a rolling body. It is the kinetic energy of rolling body. With the help of this formula, we can find out the kinetic energy for sphere, kinetic energy for cylinder, kinetic energy for ring, kinetic energy for disc. इन बॉडीज के लिए, इन यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, फॉर स्फीयर radius of gyration for sphere, moment of inertia is equal to 2 by 5 mr square.
2/5 m². This is the moment of inertia of a sphere rotating about an axis passing through its center. Moment of inertia is 2/5 m². Then radius of gyration is equal to formula is under I upon m. I is equal to m के स्क्वायर अगर है तो k is equal to under I upon m हो जाएगा. So under 2/5 m² divided by m, m कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा under 2/5 and this is multiplied with r. And this is the radius of gyration of the sphere. Substituting k is equal to under 2/5 r in this equation, therefore kinetic energy for sphere is half mv². k का स्क्वायर है under 2/5 r whole square divided by r² plus 1. Therefore kinetic energy of sphere स्क्वायर रूट हटेगा, ये r के साथ में r कैंसिल हो जाएगा, r² हो जाएगा, यहाँ पर r² कैंसिल हो जाएगा, you will get 2/5 plus 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/2 mv² multiply with cross multiplication is 7/5 and hence kinetic energy of rolling body, that is sphere, is 7/10 mv². So in the similar way we can find out the kinetic energy of a cylinder, kinetic energy of ring, kinetic energy of disc. तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम एज ए एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं. मतलब आपको किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहेगा, उसका आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा और रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करने के बाद में इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा. सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट